Yo, what's up guys, Tanmay here, and this October I went on a road trip and honestly it was so much better than what I expected. The location was Khas Patar, also known as Khas Valley, also known as Valley of Flowers, which is located about 20 to 25 kilometers from Satara city and about 300 kilometers from Mumbai. It's a plateau full of hundreds of different flowers which bloom during and post monsoon times between August to October, and it is also a UNESCO heritage site. But that's not all. Along with the Valley of Flowers, we also visited the highly underrated Vajrai waterfall, which was probably even better than the actual Khas Plateau visit, as we faced some crazy challenges and had some epic experiences. All this and a lot more coming up in this vlog, so sit tight and watch this video till the end guys, because this one is gonna be epic. So we started off our road trip at around 3 AM early morning on Saturday, as we had to reach the Khas Plateau by 10 AM, and it's about 6 to 7 hours of journey by road, and it's highly recommended to visit early in the morning, especially if you're planning to visit Khas Patar on a weekend, as later it gets very crowded. तुला चाय? चाय कौन नहीं पीता यार? That's a very huge fan. So took a quick stop midway at a food court, had nice bun maska and even gave some to the doggos. Always feed the stray dogs no matter where you are. After the quick stop, we headed to Khas. As we reached Satara and the Khas Plateau area, we were mesmerized by the green lush nature all around us. It was all green everywhere, man. And if you're from city like Mumbai, this is rare for you, right? So the weather is beautiful too. We took another halt to check this remote location at a cliff, from where the view was really amazing. Just wait and watch. This is where we flew our drone and the view was spectacular. कैसा कर सकते हैं बता? देख रेस बघ ना कसे आलेले दिसतात बघ छान. ब्रो उधर वो विंडमिल है क्या? वो कोने पे देख. किधर दिख रहा है? विंडमिल उधर वो एज पे. तूने कहा चश्मा पहना नहीं है ना? हाथ नहीं फ्री मजा. तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं खास पठार एरिया में, एंड हम लोग एक ऐसा ऑफ बीट लोकेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं. यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे. इट्स अराउंड कितना बज रहा है? 9 बजा? अभी तो 8 ही बज रहा है. एंड क्लाइमेट बहुत अमेजिंग है. द व्यू इज सुपर अमेजिंग मैन. क्लाइमेट आज बहुत सही है. So we are going to the edge of a cliff, and hopefully we will fly our drone and take some epic drone shots. कहाँ से जाएंगे वहाँ पे लेकिन? आ रहे. You have to see the view guys. That is where we are going. Hopefully it's not that far. We don't know that. We are not still sure how far it is, but it does look amazing. If you guys can see over there, where do I show? Okay, there. Camera captured that though. I don't think so. That is the entire Satara city. चश्मा लगा क्या इसको? From the top of this cliff. Drone कार्ड बोलते हैं. I think we've come at one of the best locations around Satara. मेरा भागता बोल लेना वीडियो. जा भाग. हाँ. तो पीछे जाना, रुकना इधर ही. हेलो. हाँ चालू कर दे. भाग ना तू. ये चलते हुए ले ले और फिर ऐसा पैन करना. हेलो. हाँ इसको येता है. क्या है ये भाई? क्या लोकेशन है ये? ब्रो कैंपिंग के लिए परफेक्ट जगह ये. वही तो बोल रहा हूँ. क्या ग्रासलैंड है यार ये. ब्रो मैं तो बोलता हूँ उसको. अबे भाई उधर देख पूरा. What a beautiful location this is. This is the entire Satara city, and we are on this cliff. This is a really epic location even for camping. बहुत सही जगह है यार. क्या जगह है ये. मज़ा आ गया.
I don't think the camera is doing justice to what we are seeing. This is the best time to come and visit this. Suddenly we also noticed a wild peacock down in the valley, and we had an idea and flew our drone towards it to get some epic shots. This was a once in a lifetime moment. दिस इज़ अ रियली नाइस लोकेशन. आप अगर कास पत्थर आ रहे हो ना तो ऑन द वे ये पूरा ग्रास फील्ड्स. हाँ यार, कास पठार. ओके, कास पठार बोलते मराठी में, बट हिंदी में यूजुअली कास पत्थर ऐसा रीड करते पब्लिक, बट इट इज़ कास पठार इन मराठी. ओके, एंड दैट इज़ हाउ यू ओरिजिनली प्रोनाउंस इट. Plateau is called Pathar in Marathi. Because what? Plateau is called Pathar in Marathi. Okay, thank you for the information. तो ये पूरा ऐसा एक माउंटेन एरिया है. उसके पहले जो आप घाट चढ़ते हो कास पठार के लिए, उसके पहले एक पूरा माउंटेन एरिया है. वहाँ पे आप अगर आप आपके व्हीकल में आ रहे हो तो आप पार्क करके वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो. बहुत सही जगह है, स्पेशली अगर आप रेनी सीजन या ऐसे क्लाउडी वेदर में आ रहे हो ना. क्या कंडीशन है यार, ये क्लाउड कंडीशन इज़ परफेक्ट टुडे एंड इट्स रियली अमेजिंग. रेंजवर इथपर्यंत तरी येईल ना. So we took a halt for breakfast at this place. Let me just show it to you. श्री क्या है ये? श्री सिद्धटेक. श्री सिद्धटेक नाश्ता सेंटर. कैसा लगा नाश्ता? अच्छा था, काफी अच्छा था. गरम गरम वड़ा पाव दिया उसने. It was good. है ना. मिसल पाव was also nice. Yes, it was. So you guys can. हाँ बाबा. सुबह बन मस्का खाया था, बाद में कुत्ते को डाल दिया. So you guys can definitely take a halt over here अगर आप कास पठार आ रहे हो तो. थम्स अप भी मिलता है यहाँ पे. All right, so leaving from this place where we had our breakfast, and now the next stop is the final destination, which is Kaas Pathar Valley, which is also a UNESCO heritage site. याद है वो सर्कल वाला घूम रहे थे अपन ऐसा. भाई नेक्स्ट लेवल कॉमेडी हो गया था. सॉरी यार. 1 कैसे कौन से साइड घूम रहा है? कोई भी साइड पे. तेरे को कौन सा घूमने का है? वो साइड पे घूम. हाँ चलो 1. रुक जा पहले, सब लोग सेंटर में आओ ना. अपने को अपने. हाँ 1 2 3. सॉरी यार. हाँ काय करतो रे? येडा झालाय काय? आम्ही फिरतोय दोघं, तू काय करतोय? जो क्रश करता है तो तेरा त्रिकोण बनता है. सिर्फ एक ही ऊपर आए तो क्या बनेगा? फ्लैट ही बनेगा. कैसे बनता है? अरे जब दो क्रश करेगा तो क्या बनेगा? क्या बना है? I like this. What? बोलो, वापिस बोलो. Life is this. I like this. चला चलो फटाफट पैकअप.
Finally, after the breakfast, we moved to our main location, Kas Patar. Yes, finally. हाँ 20 ना? थँक्यू. अजून किती वेळ आतमध्ये? 300 मीटरवरती पार्किंग आहे. अच्छा. हां. तिथून बस आहे वरती जायला. ओके. बस तुम्हाला गेट वर सोडणार, तिथं पाय फिरायचं आणि परत बसणं खाली यायचं. चालेल. बसचा 20 रुपये चार्ज एका माणसाला रिटर्नचा आहे. अच्छा, बसमध्ये बसून जायचं का? बसमध्ये. ओके हे चालेल. बघून झालं की पुढे कास लेक पण आहे 2 किलोमीटरवरती. हां. तिकडे नंतर गाडी घेऊन जाऊ शकता. त्यामुळे बांबोली बोटिंग 12 किलोमीटर. ओके चालेल. थँक्यू. So if you're coming in your private vehicle, you have to come over here and park your car and then get on with their public bus. So these guys have arranged bus service to take you to the actual plateau. Okay, you can't take your car over there, so you have to come over here and get in their bus. And there's good parking facility over here. So bus के लिए ticket से 20 rupees है Per person. per person. And car parking at 20 rupees. So it's pretty cheap. चलो. So we got on the public bus. So this Kas Patar or this Kas plateau or this entire valley of flowers is a full plateau which has hundreds of varieties of flowers that bloom during different times of years. Now it's a UNESCO heritage site, and the best time to visit this place is around July end to October end. This whole area is operated by forest department officials and the management is pretty good. There you can hire your own guide and they usually have no standard rates. As of now, we gave 100 rupees to the guide and he was more than happy. And that guide will actually give you a tour of the place and show you the different flowers and details and the name of the flower and their speciality. So if you are into flowers and nature and photography, and if you want to know more, then doing a guide is a good decision. So this is where you enter. If you have an online ticket, you can show it on your phone. And we've assigned ourselves a guide, right? Yeah, So we what's the assigned scenario? ourselves a guide, Mhm. and guide ko he'll take us for a tour inside for half an hour to 45 minutes. He'll show us the flowers and all, Mhm. and then uske baad We can roam we can around, roam right? around. Yeah, we can roam around. Charges इतना ऐसा कुछ specific नहीं है ये लोग का. You can give as per your will. ठीक है, we have decided to give something around 100 rupees or something. That's cheap enough. चश्मा का We saw some pretty wild and crazy flowers, guys. I mean, have a look. थांबा मला पण ऐकू दे. त्याला बोलतात आबाळी. ते बघा तिकडे याचा पिरियड असतो सकाळी 7 ते 12. 12 वाजता हे मिटलं की हे निलिमा म्हणून आहे. आता या कळ्या दिसतात ना, ह्या कळ्या हे ओपन होणार. जरतारी 24 ला 8 वर्षातून एक बार याचे फ्लावर येतात. कसे कोणत्या कलरचे? जांभळा कलर असतो. जांभळा कलर. विकायला झाड आहेत का इकडे? मैं वही बोल रहा हूँ, अभी निकल के अपन महाबलेश्वर भी जा सकते हैं. समझा क्या? ये क्या कमल देके गया यार, बीजेपी का अच्छा कुछ किया है लाइफ में? अपन जाते हैं मस्त बगीचा में. अरे मोदी यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, पकड़ लेगा तेरे को. अरे नहीं रे, क्या पकड़ेगा? अपन स्ट्रॉबेरी खिलाता तेरे को बगीचा में मस्त. दिखाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी, एकदम सेक्सी वाला. अच्छी बात दो नहीं है.
अंकुर और अभिषेक है ना, कल पता है ना कौन आने वाला है पे ये लोग दोनों अंदर। इतने प्रतिभाशाली लोग हैं हमारे यहाँ पे। मजा मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। So in recent years, the flowering has reduced probably due to climate change. So it's not like how it was 10 years ago or probably what you see on Google Photos. But it's pretty crazy. There are small patches of different flowers, different variations. And you can explore that entire plateau in about 1 or 2 hours. And after about an hour of exploring, we decided to leave as the crowd was growing. And we got kind of exhausted. So there's this lake also around 1 or 2 kilometers from that Khas plateau, which is also I guess known as Khas Lake, but we decided to skip that and move on to the next epic location, which is the Vajrai waterfall. Oh shit, अबे बोल अभिषेक, उधर नहीं जाएंगे ना ब्रो। अच्छा है, अबे क्या साइज है ये, कितना अच्छा है, क्या है गाइस में मूत रहे हुए, जस्टिफाई नहीं कर पाता नहीं रे, यहाँ पे जो अपन आंखों से देख। So this location is around 5 to 10 kilometers from Khas Plateau region, as it takes around 30 to 45 minutes to reach by car. The road is okayish, but after you reach the main village over there, which is like the base point of that waterfall, it's a huge waterfall by the way. It's a proper trek of about 4 kilometers, and guys, if you want to reach the edge of the waterfall, then make sure you wear your proper trekking gear, which is what we did not do, and you'll see that in that video. So if you're visiting Khas Patar Plateau, there is a special waterfall over here which is known as Vajrai waterfall, which many times people don't visit because it is a little far, but we'll show you the visuals and I'm sure you'll want to visit it once you see the visuals. जरा म्हणजे पायवट कोणाला पण कळेल ना। थँक यू। So it's a hike of around 45 minutes. 4 kilometers बोले है यार, 4 kilometers है नहीं, it's not 4 kilometers. But the view is worth it. Can you see the waterfall from over here? We can see it. मैं zoom in करके बताता हूँ यार, बहुत सही लग रहा है देखने को। अगर ये दूर से हम लोग को दिखता नहीं ना वाटरफॉल इतना अच्छा, तो हम लोग तो यहाँ पे नहीं आ रहे थे, राइट? We were almost planning to go home. चांस ही नहीं। That is return back. बगीचा में जाके स्ट्रॉबेरी क्रीम खाने वाले महाबलेश्वर में। वो तो खाएंगे ही। अब इधर इतना दूर आ गए हैं तो वहाँ पे तो विजिट बनती है। अरे देखो गाइस, वाटरफॉल आ गया। देखो, माय गॉड, इतना नजदीक। They are building a red brick house. Pretty cool, na? So initially we took the wrong route. Actually there are 2 routes to the waterfall. One is to the viewpoint of the waterfall, which is very much far away from the actual waterfall, but you get to see the entire waterfall. And we took that route because that is the easy route and there are actual steps and you can hold on to the bar and it's a pretty easy hike. It's not exactly a trek, but that is where you do not reach the waterfall, okay? You come to a point where you cannot proceed further. Good movie to watch. Okay, so this is the viewpoint. यहाँ से पूरा दिखना चाहिए अच्छे से। So we took that easy route first. We didn't know which route to go. So What a joke. तो उंची नहीं वाढवली ना व्यू पॉइंट। सो यहाँ से तो कुछ क्लैरिटी नहीं है यार। वो आपको वाटरफॉल दिख रहा भी है क्या? आपको सिर्फ उसका स्टार्ट दिख रहा है, बट अदरवाइज
because of the tree cover you can't see anything, so we're not flying our drone. हम लोग अभी और नीचे जा रहे हैं. One mistake that we've done is we are wearing chappals, which is never recommended or any kind of hike, especially if you are hiking in rainy seasons and in a jungle. Yeah, we wanted to be light, so ज़्यादा ही light हो गया यार. Oh shit. अंकुर के But then we backtracked, came back again, and then we took the actual route which took us to the mid of the waterfall. That is, we were inside the waterfall, that is backside, and that was crazy. And the drone shots of this place, oh my god, the entire waterfall is looking absolutely amazing with all the greenery around, especially because of the monsoon climate, and the climate was pretty good. There was a moment where there was a rainbow which was at the edge of this waterfall, and we captured that in the drone shot as well, which was crazy. पण तुम्ही काय करता त्याला मग हे बघ, थांबायला? हे बी ते ना पेपर हा तेच आहे हे बघ, चढणारच होतं माझ्यावर. So we hung out over there for some time, and we came back with some crazy experience of us being bitten by leeches. Yeah, we actually had leeches on our legs, which made us paranoid because that was a first time experience. Oh, we are just back from the Vajrai waterfall trek. This is a must do if you are coming to Kas Patar Valley, and the waterfall is amazing, especially in the monsoon season. So some things that we did wrong is I and another guy Ankur actually did the trek with the slip-ons. Please wear full sleeves, full pants and proper trekking shoes with long socks. आज हम लोग ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी. हम लोग को लगा यार ये ज़्यादा दूर नहीं है, it would be walkable, but it was around 2 hours का trek. It is difficult, it is definitely not easy, and one first of a kind issue that we faced was that हमारे पाँव पे लीच एंड ऑल चिपक गए थे. बट इट वॉज ऑन द स्पॉट प्लान, तो हम लोग ने एंटिसिपेट भी नहीं रहा कि लीच होगा. बहुत मतलब बहुत फट गई थी हम लोग की उसके बाद, बिकॉज द लीच वॉज लाइक सकिंग ऑन टू द ब्लड एंड ऑल. इट वॉज वेरी ग्रोस एंड वेरी स्कैरी, एंड वो फोबिया बैठ गया अभी दिमाग में. एंड वर्स्ट पार्ट इज आई एंड अदर्स वर नॉट इवन वेयरिंग प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़. बहुत बड़ी गलती करी हमने. बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना, कोई भी ट्रैकिंग हो. ये सीख लिया है एक्चुअली. अब मुझे पता नहीं था कि ये वो एक प्रॉपर ट्रैक है. हम लोग ने इधर कार जहाँ पे पार्क करी है ना, ये जो टेम्पल है, हमको क्या लगा कि यहाँ से सिर्फ वॉकेबल डिस्टेंस पे वो वाटरफॉल है जो दिख रहा था दूर से हम लोग को. बट ऑफकोर्स वो लंबा ही था, बट वी थॉट दैट इट इज़ नॉट अ ट्रैक, इट इज़ जस्ट अ वॉकेबल थिंग. बट अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट टू बी ह्यूज वॉकिंग वाला, ह्यूज प्रॉपर ट्रैकिंग. एकदम प्रॉपर ट्रैकिंग, मतलब पत्थर वत्थर, क्लाइंब इनक्लाइन सब था. तो भाई फट गई हम लोग की. तो आप ये गलती मत करना. एंड हाँ, 2 घंटे का ट्रैक है. मानसून में आ रहे हो तो जैसे कि मैंने बोला, फुल पैंट, फुल स्लीव्स, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ एंड सॉक्स पहन के ही आना. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. अभी शायद हम लोग महाबलेश्वर जाएंगे. अभी तक हमारा लंच बाकी है. इट्स अराउंड 3 बज गया क्या? इट्स 4 PM. तो अभी तो हम लोग लंच करेंगे एंड वील प्रॉब्ली गो टू महाबलेश्वर बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव दैट स्ट्रॉबेरी शेक फ्रॉम बगीचा. लास्ट टाइम भी वहाँ पे गए थे. सो अभी ऑल पैकिंग डन, चेंज वगैरह करके हो गया है. लेट्स गो.
So we are having lunch at this place called Heritage Wadi, which is like literally in the Kas Patar Valley. They also have rooms to stay over here, but we are just having our lunch. Hopefully it will be great. So let's see how that goes. So lunch was pretty good at this Heritage Wadi restaurant and lodging home. We had chicken thali, which was pretty good. I'm pretty sure you guys would like it. एकदम भी ऐसा out of the world नहीं है, but you can definitely have lunch and snacks over here. That is because it is so close to the Kas Valley entrance, the main entrance. So you guys can stop and park your car over here and have quick lunch, quick bites, and then move on with your journey. After coming back, we quickly changed and decided that let's pack up now. Let's go to Omkar's place, which is in Vai, which is in a native place called Pasarni. So Pasarni is the village name, which is near Vai city. That is where Omkar's house is, native place is, basically his mother's native place. So we headed there, and on our way we actually had dinner at this pretty generic place. It was decent enough, and then it started raining. Luckily we actually had our dinner and we went to his place quickly, so the rains was not the issue, but then there was no lights at his place. But the climate was so cool that we didn't really feel hot or something, or there was no issues. We were so tired that we completely dozed off, and then the next day started. So we were staying at my friend's native place. So ये वाई में पसरनी करके एक गाँव है, so वहाँ पे we were staying. So this is the house in the background. This is how a गाँव का house typically looks like. रूरल हाउसेस में रहने का फील ही अलग है यार. So यहाँ से एंट्रेंस है. That's where we had parked our car, and ये पूरा एक गाँव का ही एरिया है. So you can see गाँव के टिपिकल घर है. कोई कौलारू घर भी है. कौलारू is where you have those roofs. This is how the entrance is. थोड़ा मेसी है, बट सब गर्ल बोल. ये ऊपर झूला है एक्चुअली, तो वो झूला निकाला नहीं है. No one is staying here since 2 years now because of COVID. We all stay in Mumbai. This is the kitchen. तो आपने बीच में बंद करने आएगा क्या? नहीं, जाना पड़ेगा. And this is the backyard. ऊपर जो टेरेस है. मैं खुद ही नहीं गया हूँ. ये लोग को भी बोला ना. ए अभिषेक अंकुर, ऊपर आओ ना जरा. हाँ. अच्छा, ये बिल्ली आई भी होगी कल रात को. बिल्ला है भाई ये. बिल्ली रहती भाई ह्यूज है, देख. ऑल राइट. अरे ये टेरेस बहुत सही है यार. हम लोग कल रात को इधर आया ही नहीं यार. बारिश भी हो रहा था एंड लाइट्स भी नहीं थी ना. सो यहाँ से आप देख सकते हो पूरा गांव का व्यू एंड ऑल्सो द माउंटेन रेंजेस. These are all Western Ghats, Sahyadri mountain ranges. यहाँ से प्रतापगढ़ दिखता है, but not because of the trees. क्या trees, the Pratapgarh is not, fort is not visible. Oh, The fort is visible from here. And this is a whole scene, so you can see the. अरे बारिश था ना. तो है पांचगणीचा घाट है. Oh, Listen, if you go to पांचगणी, वहाँ पे एक बस जा रहा है. हाँ दिखा. अपन को ऊपर जाना पड़ेगा. So that is पांचगणी. So one day trip to Kas Patar successful. Also to the waterfall, which was Vajrai waterfall. अभी पैकअप कर रहे हैं ओमकार के घर से. And we also have to fill air in the car tire. मस्त एरिया है. हाँ मार्केट मार्केट एरिया.
This is the famous Satari Kandi Peda. We are tasting it. There are these awesome burfis as well. There's strawberry burfi. There's muskmelon burfi, mango burfi. You just name it. मेरा मसला है, मुला मसला है. आजकल सुक्का सुक्का लगता है. थोड़ा सा ना. थोड़ा सा मेरे को इसका हाफ दे, इसका हाफ. ये कौन थे? पेरू. पेरू बर्फी. पेरू बर्फी. क्या फ्लेवर है ना? मैं वही बोल रहा, थोड़ा कुछ अलग लेके जा. मतलब पेड़ा तो लेके पाओगे ना, बट उसके साथ ऐसा कुछ तो नहीं. स्ट्रॉबेरी. छान लगती है, गुड फ्लेवर. This is what? मस्कमेलन बर्फी. Oh. You can taste it. अबे एकदम हाँ. अबे प्रॉपर मस्कमेलन ही खा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है. This is the combo pack that you get. These are muskmelon, peru, strawberry and mango. हाँ बस हो गया, परफेक्ट है. वाला भी अच्छा है. सोमकार. So this is in Y Market. So they call it the Chowk. Okay. Okay, so it is near the Chowk. So Khamkar has several branches. So this one is in the market proper, and there is also another Khamkar at Mumbai Satara Road. अच्छा. So yeah, you can get good quality sweets over here. It's a bigger brand over here in Y, very famous. Okay. कौन है? इधर चार. What is that, Omkar? This is shave chuda. This is basically fried chuda and with shave. So this is tangy, spicy, sweet. It's very famous. So since I am a child, I'm eating this. लहानपणापासून Yeah, लहानपणापासून. हे खूप आवडतं माझ्या घरी. अच्छा. ये कहाँ पे आ रहे हैं अपन ओमकार? So this is Jolly Misal. This is just towards the upside of the famous white Dholia Ganpati Mandir. अच्छा. So इधर एक nearby hospital है, घोटवड़ेकर hospital. So that is the landmark. And मंदिर के ऊपर ही, तो मंदिर is also bigger landmark. Okay. मिसल बहुत famous है यहाँ पे. अभी देखते हैं, अपन ट्राई करेंगे. Good place if you want to have snacks. Jolly snacks. It was good. And after that we left for Mumbai, again taking a couple of stops in between. डिजिटल इंडिया है ना, सब जगह UPI कोड. हम लोग कब से बोल रहे हैं कि अभी डायरेक्ट मुंबई जाएंगे, लेकिन हर 5 मिनट बाद हम लोग एक ब्रेक ले रहे, कुछ ना कुछ खरीद रहे, एंड ऐसे करते करते हम लोग को हमेशा की तरह लेट ही होने वाला है. अभी हम लोग आए हैं शुगर केन जूस के लिए. ऊसाचा रस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डालना इसमें भी. And finally we came to Thane, where we actually had our lunch. So ending our journey at this place called the Bagel Cafe. Just to what? कास पठार वजराई वाटरफॉल. ओके. 2 मिनट ब्लैंक हो गए ना सब लोग. भाई घर के क्या है. राइट. अपन करके क्या है ना, एक सेकंड के लिए सब लोग ब्लैंक हो गए थे ना. And then finally we came back to Mumbai.
So this was the whole experience, guys. And if you are from Satara and if you know some more places, you can put them in the comments for someone else who's maybe planning to visit. Even I might visit it again because it is such a beautiful place. And yeah, this was it for this vlog. I hope you enjoyed the vlog. See you guys in the next one. Peace.